you can put up in the chat. Okay, other than that, don't put any unnecessary comments in there. ठीक है? तो आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ मैच्योरिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? अर्ली, एवरेज और लेट मैच्योर के जो बीच में अंतर होता है। तो इसके दौरान अगर आपकी जो मेरे जो ऑडियो या जैसे कि व्हाट्स दैट ऑडियो नहीं तो वीडियो जो है अच्छे तरीके से प्ले नहीं हो रहा, तो आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हो, लेकिन इसके अलावा जो अननेसेसरी कमेंट्स है उस पे मत डालना, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट लेके I'll send it to the academic in charge. Okay, so I'll start off with a class. I'll this thing switch off my video for the time being. Okay, because I'm going to screen share here. It's already there, so that there's no interruption. Wait, just give me a minute. Okay, so the learning. Okay, I'll just like to cross check again. Is my audio clear? Can you just give a thumbs up so that I can see? Okay, what about the screen? Is it visible? Okay, I'll go ahead then. So in today's class, actually, you'll be learning about maturation. Okay, we'll be dealing with the concept of maturity, in which we'll be discussing about dental maturation, sexual maturation, skeletal maturation, morphological, otherwise also known as the somatic maturation, and then we'll be discussing on early, average, and late mature. तो आज हम पढ़ाएंगे मैचुरेशन के बारे में, जैसे कि इसको परिपक्वता जैसे बोलते हैं आप लोग, ठीक है, हिंदी में। तो उसके जो कंसेप्ट है, स्पेशली डेंटल को लेके, सेक्सुअल, स्केलेटल, ठीक है, कंकाल जो है, फिर इसके बाद मॉर्फोलॉजिकल, शारीरिक तौर पे जो है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अंत में हम लोग अर्ली, एवरेज और जो लेट मैच्योर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। Okay, now see, if we go by the definition, okay, maturation is a process. Say, when I use the word process, it means the changes which take place. Okay, now we have earlier discussed in the previous class about adolescence growth spurt, right? It all come under this, the adolescence growth spurt. Okay, where we have discussed about the peak height velocity, the peak weight velocity. In fact, the word puberty, okay, where a person actually becomes sexually mature, also it comes under here. Okay, now it will actually mark the progress towards an adult state. It's just a process. It tries to define all the changes which take places. Okay, when the individual is passing from adolescence up to the adult stage, it will mark those changes. Okay, now in this process, there will be changes obviously at the tissue, the organs, and the organ system, right? There will be growth, but it will happen at a different time and at a different rate. Okay, the changes, as I mentioned earlier, it will be structural and functional in nature. Now, I have given a definition here also stating maturation is a process. Okay, is a process means it involves, we are defining all the changes, where maturity is a state, matlab, it means actually they are already in that adult state. Okay, now जैसे कि अभी हम मैच्योरेशन के बारे में मैं जैसे डिफाइन कर रहे थे, जैसे कि मैच्योरेशन है वो एक प्रोसेस है जिसके दौरान काफी चेंजेस, बदलाव आते हैं शारीरिक तौर पे, ठीक है। तो इस पे प्रीवियस क्लास में हमने एडोलेसेंस ग्रोथ स्पर्ट के बारे में पढ़ाया, ठीक है, जिसपे पीक हाइट वेलोसिटी, पीक वेट वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया, फिर प्यूबर्टी के बारे में भी हमने मेंशन किया। तो ये सब मैच्योरेशन का एक पार्ट ही है, ठीक है। तो ये दर्शाता है आपकी जब तक जो बदलाव, जो शारीरिक तौर पे जो बदलाव आते हैं, ठीक है, जो आपको एडल्ट स्टेट तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसके दौरान क्या होता है, शारीरिक तौर पे काफी बदलाव होता है, क्योंकि आपकी जो टिश्यूज वगैरह जो होता है, ठीक है, दे विल आई मीन देयर इज सेल मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि आपकी जो सेल होता है वो मल्टीप्लाई होता है ना, देयर इज इंक्रीज इन साइज, ठीक है। तो जैसे कि टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम की जो जिसका जो वृद्धि होता है, ठीक है, ये जो होता है दूसरे टाइम पे होगा, एक ही टाइम पे नहीं होता। जैसे कि हमने पहले ही एक just giving an example here, I've mentioned like growth in terms of the extremities, right? It will take place first at the start off from the head, the hand, and the feet.
which will be followed by the arms and the leg, right? And later the torso and the shoulder. जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि जब विधि का शुरुआत होता है, ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आपका सिर, हाथ और जो पाँव है उससे शुरुआत होगा, जिसके बाद उसके आपके जो हाथ और लेग्स जो होता है, ठीक है, उसके बाद आपकी टॉर्सो और शोल्डर पे जाता है। तो जो मैचुरेशन ओवरऑल अगर हम लोग डिफाइन करें तो वो होता है स्ट्रक्चरल, शारीरिक तौर पे भी और फंक्शनल की जो नेचर पे भी जो बदलाव है उसको डिफाइन करता है, ठीक है। तो मैचुरेशन का अल्टीमेटली उसका मतलब है एक प्रोसेस है जिसके दौरान बदलाव आता है। मैच्योरिटी मतलब वो एक स्टेट होता है जहाँ पे आप ऑलरेडी एक एडल्ट स्टेट पे पहुंच जाते हो। Now, when we talk about maturation, okay, there are various ways of assessing that one. Now, the most commonly used method, okay, the most commonly used method are the dental maturation, the dental, okay, the sexual, skeletal, and the morphological. जैसे कि हम अभी बता रहे थे इंग्लिश में, जैसे कि उसको एसेस करने के लिए, ठीक है, मैचुरेशन को एसेस करने के लिए खास तौर पे शारीरिक तौर पे बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन जो सबसे कॉमनली यूज हम लोग मेथड इस्तेमाल करते हैं वो है, एक तो है आपका डेंटल, दूसरा है सेक्सुअल, ठीक है, तीसरा है स्केलेटल और चौथा है मॉर्फोलॉजिकल मैचुरेशन करके। तो सबसे पहले हम लोग डेंटल मैचुरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और उसके बाद we will go to the next one. So starting off with dental maturation, okay, when we are talking about dental maturation, you must have heard about your deciduous teeth or the milk teeth, okay, and the permanent teeth, okay. Now the age and the eruption of the emergence of the deciduous teeth and the permanent teeth and the number of teeth erupted at a given age is used as a measure of dental maturation, okay. Now the deciduous teeth, which is 20 in number, they will erupt between 6 to 30 months. Okay, and the permanent teeth will follow after that, and it will erupt between like 6 to 13 years of age. Okay, obviously your milk teeth has to fall down, then only it will be replaced by the permanent teeth. Now the other important indicator for dental maturity is a tooth calcification, that is the hardening. Okay, now this method used radiograph technique, and it was brought about by Demarijan in 1973. Okay, now the calcification of the permanent teeth here we're talking about, it will begin at the late gestation period and will continue to about 16 years of age on an average. ठीक है, तो सबसे पहले जो डेंटल मैचुरेशन है, अगर डेंटल मैचुरेशन के बारे में हम लोग बात करें तो ये जो है, ठीक है, जैसे कि जो आपके दूध वाला जो दांत निकलते हैं, ठीक है, और जो आपके परमानेंट टीथ जो होता है उसके बारे में उसको दर्शाता है इस पे, ठीक है। जैसे कि आपके जो दूध के दांत जो होता है, ठीक है, जब आप 6 से लेके 30 महीने के बीच पे वो लोग निकल जाते हैं, ठीक है, और वो 20 नंबर पे होता है। फिर उसके बाद जो आपकी परमानेंट जो टीथ होता है, ठीक है, वो रिप्लेस कर देते हैं आपके दूध के दांत। जब आपके दूध के जो दांत गिर जाएंगे तभी तो आपका परमानेंट टीथ निकलेगा ना। तो परमानेंट टीथ जो होता है आपकी 6 से लेके 13 साल में निकल जाता है उसका, ठीक है। तो ये एक इंडिकेटर होता है आपका डेंटल मैचुरेशन का। फिर दूसरा एक जो इंडिकेटर जो निकाला गया है वो है जैसे कि आपका दूध का जो टूथ कैल्सिफिकेशन जो बोलते हैं, जैसे कि आपकी जो दांत जो होता है करक जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो टेक्निक निकाला है देमेरिजान ने, और ये रेडियोग्राफ मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो कैल्सिफिकेशन जो बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका दूध जो आपका दांत जो होता है वो अकड़ जाता है, ठीक है। स्पेशली खासतौर पे आपके जो परमानेंट टीथ होते हैं, ये शुरुआत जो होता है लेट जेस्टेशन पीरियड पे, ठीक है, और ये जब तब तक चलता रहता है जैसे कि 16 साल तक, ठीक है, एवरेज पे। तो ये दो चीजें इन टर्म ऑफ डेंटल मैचुरेशन, वन इज द eruption of your deciduous and the permanent teeth, okay, and the tooth calcification. These are important indicator for assessing the dental maturation. तो dental maturation के अंदर दो चीजें, एक तो आपकी दूध के दांत निकलना, ठीक है, और दूसरा जो है आपकी परमानेंट जो टीथ है वो निकलना, और तीसरे जो है आपकी
टूथ कैल्सिफिकेशन, ठीक है, जब वो हार्ड हो जाता है। तो ये 2 इंडिकेटर्स जो होते हैं डेंटल मैच्योरेशन को असेस करने के लिए। Okay, somebody has posted just. Okay, I think I'm talking in English and Hindi both. So please don't repeat the same thing again and again. Okay, so if there's a problem with your audio or something or with your internet connection, though I can't. I can't be this thing blame for that one. अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक से नहीं चल रहा तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकते. Okay, the next is the sexual maturation. Okay, it's a process in which the sex organs and reproductive system mature. Okay, as I mentioned, in which you attain the sexual maturity status. Okay, in which the person is capable of reproducing. Okay, now for the assessment of the sexual maturation, okay, commonly the secondary sex characteristics are used. For example, in females, okay, the development of the breast, the menarche, that is the period, onset of the period. While in case of male, the genital development, okay, the voice changes and the facial hair are often indicator for secondary sex characteristic. Okay, one thing to keep in mind is like girl enter and end puberty approximately 2 years before boys. Now, if you look at the right-hand side, there is a scale which has been given by Taylor in 1969. Okay, there are 5 stages even for boys as well as for girls. So these are the indicators, okay, to assess the sexual maturation in males and females. जैसे कि जब हम sexual maturation के बारे में बात करते हैं, जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में भी, ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसपे आपके सेक्स ऑर्गन्स जो और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो जाते हैं. वो इंसान जो होता है इज केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है. तो जो उसका असेसमेंट होता है सेक्सुअल मैच्योरेशन का ज्यादातर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक पे ही बेस है. तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? लड़कियों में ज्यादातर हम देखते हैं कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट का, ठीक है, और उसका जो पीरियड का ऑनसेट, मेनार्च मतलब है पीरियड, ठीक है, कब शुरू हुआ. लड़कों में है जेनाइटल डेवलपमेंट, ठीक है, और वॉइस बदलाव होना और फेशियल हेयर, ठीक है, जब चेहरे में जो बाल निकलते हैं वो एक इंडिकेटर होता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक का. और एक चीज तो ये भी ध्यान रखना है कि लड़कियां जो होता है प्यूबर्टी, ठीक है, उसका 2 साल पहले लड़कों से शुरुआत हो जाता है और अंत भी जल्दी हो जाता है. तो जैसे कि अगर राइट हैंड साइड पे देखोगे, ये टेनर ने दिया है 1969 पे, ठीक है, उसने सेक्सुअल मैच्योरिटी का जो रेटिंग्स दिया हुआ है लड़का और लड़कियों पे, तो 5 रेटिंग्स है, ठीक है, उसके बेसिस पे एसेस किया जाता है. लेकिन one thing is like to keep in mind, in the present day context, you won't find people doing assessment based on sexual maturation because of ethical issues involved in it, ठीक है. तो अगर करंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो रिसर्च जो होता है सेक्सुअल मैच्योरेशन पे बेस नहीं होता है असेसमेंट, क्योंकि उस पे एथिकल इश्यूज होता है यार. Now, this coming to the skeletal maturation, okay, the skeletal maturation is even used in most of the research, current day research, if you look at the articles available online. Okay, now when we talk about sexual maturation, what it means, skeletal maturation, sorry, what it means is like, we are trying to assess the bone, okay. When you look at the bone, okay, it will each start from a primary center of ossification. Okay, so primary center of ossification means like initially it will be in the form of a soft tissue. Okay, then it will enlarge, it will grow in size, it will harden, and it will ultimately fuse with the epiphysis of the other bone. Okay, now if you look at most of the research, okay, there is a method which they have used, which is known as the Tw3 method, okay, which is based on the radiograph of the hand and the wrist. I'll come into detail in the next slide for that one. Okay, तो skeletal जो maturation जो होता है वो जैसे कि आप उसकी definition से भी उसकी जो definition से नहीं, जैसे कि उसकी wording से भी आपको पता चल गया होगा, कंकाल,
ठीक है। तो जो हड्डी की जो शुरुआत होता है, ठीक है, सबसे पहले एक प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन शुरुआत होता है। इसका मतलब सबसे पहले आपके जो हड्डी है एक सॉफ्ट टिश्यू के तौर पे होता है, ठीक है, बाद में वो बड़े होता है, ठीक है, फिर साइज में भी उसके बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद वो हार्ड हो जाते हैं और फिर दूसरे बोन के साथ वो फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे जो कॉमन टेक्निक जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो टेनर व्हाइट हाउस मेथड होता है, वो मैं अगले स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, आपका जो रेडियो, ये एक रेडियोग्राफ टेक्निक है, दिस द एक्सरे टेक्निक जो बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं खास तौर पे आपकी हाथ और कलाई का, ठीक है। Now, as I mentioned in the previous slide about the Taylor-Whitehouse method, okay. Now, Taylor-Whitehouse method, when initially it came up, it was known as the Tw3 method, okay, which came up in the early 1960s. Okay, this method was actually developed based on 2,700 British lower and middle class children. Later, the revised version, which came up again in 1983, that is the Tw3 method, which is currently used. Even for the age verification method, also this method is used. Okay. Now, the Tw3 method was based on the British, Belgian, Spanish, Italian, Argentinian, and Japanese population, as well as the higher socio-economic status sample of the American youth. ठीक है। तो जो टेनर व्हाइट हाउस मेथड जिसके बारे में पहले पिछले स्लाइड पे बोल रहे थे, ठीक है, जो सबसे पहले निकला था वो था Tw2 मेथड करके। तो ये मेथड डेवलप किया 1960s पे, ठीक है। तो ये मेथड डेवलप किया गया जैसे कि पॉपुलेशन स्टडीज पे बेस पे, जैसे कि उन लोगों ने 2700 ब्रिटिश जो लोअर और मिडिल क्लास इनकम के जो बच्चे उन लोगों को असेस किया, ठीक है। फिर उसका जो रिवाइज वर्जन उन लोगों ने निकाला 1983 पे, वो Tw3 मेथड के नाम से जाना जाता है, और ये मेथड जो होता है एज वेरिफिकेशन पे भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो Tw3 मेथड जो है वो निकाला गया ये स्टडी करने के बाद, जैसे कि ब्रिटिश, बेल्जियन, स्पेनिश, इटालियन, अर्जेंटीना और जापानीज पॉपुलेशन पे बेस है, लोग के उन पॉपुलेशन बेस पे स्टडी करने के बाद, इसके अलावा जो हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो जैसे कि स्पेशली जो अमेरिकन यूथ के जो है, ठीक है, उसका भी सैंपल उन लोगों ने लिया, उसके बाद ही Tw3 मेथड निकाला गया। तो Tw3 मेथड क्या है, ठीक है। तो I'll go into detail on this one. Now, the Tw3 method, that is the Taylor-Whitehouse tree method, it's based on 20 bones, okay, region of interest, which is also known as the region of interest. Now, 20 bones RUS I've mentioned here, okay. R stand for radius, U stand for ulna, and S stand for the short bones here, okay. Now, the radius, ulna, along with the 7 carpal bone. Now, these are the carpal bone, okay. These are the metacarpals. Okay, these are known as the phalanges. Okay, so the first, third, and the 5th digit phalanges were used, as well as the metacarpals. Okay, now remember, proximal means towards the inner side, distal means towards the outer side, right? So proximal, medial, and the distal phalanges also were incorporated. So altogether, 20 region of interest were there. Now, each indicator, each bone, okay, the region of interest is expressed as a stage from initial ossification to the union. Okay, what it means is depending on the shape and size of each bone, okay, and checking into factor the fusion with the other, okay, a point score was given by comparing with this reference image. So you can see a score like A, B, C, D, E, F, G, H, and I, right? So if you look at the reference image of A and I, it's completely different, right? Similarly, if you compare with B and C, G is completely different. So depending on this reference score, each bone, okay, was assessed, and checking out the size, shape, and the fusion, okay, the point score was given. तो जो Tw3 मेथड जो है, ठीक है, उसमें 20 बोन्स जो है वो कंसिडर किया गया है,
ठीक है, RUS करके जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो उस पे रेडियस, अल्ना और आपकी शॉर्ट बोन्स जो है वो इंक्लूडेड है। तो उसमें रीजन जो 20 बोन्स है RUS, उसको रीजन ऑफ इंटरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो उसमें से कौन कौन सा बोन है? एक तो आपका रेडियस अल्ना हो गया, ठीक है। उसके बाद आपकी जो 7 कार्पल बोन है, आपका कार्पल बोन इधर है। फिर उसके बाद आपका जो मेटाकार्पल्स है, ठीक है। फिर आपका जो फेलेंजेस है, ठीक है, इसको फेलेंजेस बोलते हैं। फेलेंजेस पे भी 3 अलग डिवीजन होता है। फिर आपका जो प्रॉक्सिमम मतलब शरीर के अंदर की तरफ, ठीक है। मीडियल जो होता है बीच में होता है, डिस्टल मतलब बाहर की तरफ। तो ये जो है पहला डिजिट, तीसरा डिजिट और 5वीं डिजिट को कंसिडर किया गया। नाउ ईच इंडिकेटर, इधर पे ऐसा मेंशन है ईच इंडिकेटर, जैसे कि ईच हड्डी जो है, ठीक है, शुरुआत से लेके अंत तक, जैसे कि जब सॉफ्ट टिश्यू के तौर पे थे, फिर उसके बाद जो बर के फिर फ्यूज हो जाते हैं ना बोन, तब तक उसको एसेस किया गया है, ठीक है। उसके हिसाब से उन लोगों ने पॉइंट स्कोर दिया गया ईच हड्डी का। तो आप इस पे देख सकते हो, उन लोगों ने रेफरेंस इमेज के साथ कंपेयर किया है। तो रेफरेंस इमेज क्या था, इस पे देख सकते हो, ठीक है। ए पे आप देख सकते हो, ए का कंपेयर करो और जाके आई का देखो, कंप्लीटली अलग है, ठीक है। अगर सी का देखो और जी का भी देखो तो अलग है। तो ईच हड्डी का जो आकार आकृति है ना, और उसका जो फ्यूजन जो है वो कंसिडर करके रेफरेंस इमेज के साथ कंपेयर करके उन लोगों ने स्कोरिंग दिया। So this is the scoring, okay, the score sheet which was given separately for male and female. Okay, now this actually is also used for the in the equation for the adult height prediction also. Okay, तो ये जो है पॉइंट स्कोर है, लड़का और लड़कियों का अलग है, आप लोग इधर पे देख सकते हो। और ये जो होता है इक्वेशन पे भी इस्तेमाल होते हैं फॉर प्रेडिक्शन ऑफ एडल्ट हाइट के लिए भी, ठीक है। नाउ another technique which we will often find for prediction of adult height is like, you know, taking the parents' height. Like for example, in case of boys, okay, taking the height of the mother and the father, okay, plus using the addition of 13, if you can see it clearly here, okay, and then dividing it by 2. In case of female, you have to minus that one, ठीक है। दूसरा आप जैसे कि कॉमनली हम लोग यूज करते हैं वो है, एक तो है जैसे कि मिड पेरेंटल हाइट का जो फॉर्मूला है, ठीक है, जिसपे आप मम्मी पापा दोनों का हाइट ले सकते हो, प्लस कर दो, ठीक है। अगर लड़का है तो आपको +13 करना होगा, लड़की है तो उसको -13 करना होगा, इसके बाद डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इस्तेमाल होता है। Now coming to the fourth one, we have the morphological maturation, which is also known as the somatic maturation. Okay, that is in terms of soma means body only. Okay, now if you go by the definition again, it refers to development of the morphological characteristic. Here we consider 2 different. One is the size age and the shape age. Now when we talk about size age, it is in terms of the size, the mass. Okay, here the composition and everything coming to. Now, if you talk about the proportions here, we are talking, for example, in terms of your shoulder width to the hip width. Okay, so all this will come in this. Now, जैसे कि morphological maturation में क्या होता है, उसको somatic maturation के नाम से भी जाना जाता है। somatic, soma मतलब body ही है उसका मतलब, ठीक है। तो जैसे कि इसमें हम लोग 2 चीजें कंसिडर किया करते हैं। एक तो सबसे पहले साइज एज, ठीक है, जिसमें बॉडी की साइज और मास को कंसिडर करते हैं। मतलब जैसे कि आपकी फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइट हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया, तो ये सब इसके अंदर आएगा, ठीक है। और दूसरा जो है आपकी जो प्रोपोर्शंस, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है आपका शोल्डर का विड्थ, ठीक है, हिप का विड्थ, तो ये सब शेप एज के अंदर आएगा। Okay, now another thing, if you go to most of the literature, okay, you'll find biochemical or the hormonal maturation also. So see, for example, you know, during the infancy and childhood, there is a constant growth, right? Now, what is the main factor behind that growth? One is the growth hormone and its stimulation, that is the IGF, that is the insulin growth like factor 1, okay, which are responsible for that one. Okay, now the level of IGF-1,
maybe it will increase to 5 to 10 fold, okay, especially around the peak height velocity. Okay, now this, the hypothalamic pituitary growth hormone and the IGF-1 and the hypothalamic pituitary gonadal axis. Okay, especially the interaction of these two are responsible for the adolescence growth spurt and the maturation. Okay, another thing you have to keep in mind is like the indicator of skeletal, morphological, and sexual maturation are more or less related because they are driven by hormones, especially during the adolescence. Okay, जैसे कि मैं सबसे लास्ट जो है बायोकेमिकल और हार्मोनल मैचुरेशन जो आप को काफ़ी लिटरेचर पे भी मिलेंगे, ठीक है, तो मैं ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करूँगी। जब आप इन्फेंसी और चाइल्डहुड के दौरान अगर आप देखोगे तो जो व्यक्ति का जो होता है एक स्लो ग्रोथ रेट होता है, ठीक है, बच्चों का इतना तेजी से भी नहीं होता लेकिन एक कांस्टेंट एक ग्रोथ रेट होता है। वो स्पेशली खासतौर पे आपके जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है, और जो स्टिमुलेट ग्रोथ हार्मोन जैसे कि आईजीएफ को जो स्टिमुलेट करते हैं, आईजीएफ मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो होता है, ये दो जो है मेन हार्मोन है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप जो रिस्पॉन्सिबल होता है विधि का जो कंस्टेंट एक ग्रोथ मेंटेन करने में आपकी इन्फेंसी और चाइल्डहुड के स्टेज पे, ठीक है। तो आपकी आईजीएफआई के जो लेवल है 5 से लेके 10 गुने बढ़ जाते हैं, स्पेशली जब पीक हाइट वेलोसिटी के आसपास होते हैं, ठीक है। और खास तौर पे जो आपकी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन और आईजीएफआई जो है, ठीक है, और हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस है, ये दो मेन जो है, ठीक है, ये दो मेन है जिसकी इंटरेक्शन के जो दौरान, ठीक है, एडोलसेंस ग्रोथ स्पर्ट लेके आते हैं, फिर मैचुरेशन जो है, ठीक है, उसको ट्रिगर करता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो स्पेशली जो स्केलेटल, मॉर्फोलॉजिकल और सेक्सुअल मैचुरेशन होता है, मोर और लेस एडोलसेंस के दौरान पे जो आप बदलाव वगैरह देखते हो, ये सब हार्मोन्स ही ट्रिगर करते हैं। Now, one thing to keep in mind, okay, now as I mentioned earlier in the previous slide, the skeletal maturation and the morphological maturation coincide with the onset of puberty. I think I mentioned in the previous class also. Okay, now skeletal maturation, okay, which is brought about by the elongation of the long bones, okay. You will have a basic idea that's when the onset of peak height velocity will take place. Now, morphological or somatic maturation, okay, in terms of size, age, and shape, age overall, okay, it's what contribute to peak weight velocity here. Now, these two are triggered during the adolescence growth spurt. Okay, the onset is earlier in females, that is 11 to 13 years old, and in boys like 13 to 15 years of age. Now, I mentioned earlier also that the onset of adolescence growth spurt will vary from one individual to the other. तो जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड पे भी बताया था, आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि स्केलेटल मैचुरेशन और जो मॉर्फोलॉजिकल मैचुरेशन होता है, ठीक है, ये जब प्यूबर्टी होता है उसके साथ कोइंसाइड होता है, एक ही आसपास पे ही होता है, ठीक है। तो अगर आप स्केलेटल मैचुरेशन के बारे में और डिटेल पे जाओगे तो आपको पता चलेगा स्केलेटल मैचुरेशन के मतलब जो है आपकी हड्डी जो लॉन्ग बोन्स होते हैं वो इलोंगेट होते हैं, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा इट्स थोड़ा कॉमन सेंस वाला भी है, तो वो पीक हाइट वेलोसिटी से मोरलेस उसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मॉर्फोलॉजिकल और सोमेटिक मैचुरेशन के बारे में अगर हम लोग और डिटेल पे जाए, जैसे कि हमने पहले बोला था साइज, एज, ठीक है, कॉम्पोजिशन के दौरान क्या है, शरीर संरचना के दौरान जो बदलाव आता है ना, फिर उसके बाद प्रोपोर्शंस वगैरह जो होता है, नॉट प्रोपोर्शन, शरीर संरचना के दौरान जो चेंजेस होते हैं वो पीक वेट वेलोसिटी को ऑलमोस्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ है, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, पीक हाइट वेलोसिटी और पीक वेट वेलोसिटी होता है वो ट्रिगर करता है एडोलसेंस ग्रोथ स्पर्ट के दौरान, ठीक है। और लड़कियों का जो होता है 11 to 13 ईयर्स के बीच होता है, लड़कों का 13 से 15 साल के बीच, ठीक है। और जो उसका ऑनसेट होगा एडोलसेंस ग्रोथ स्पर्ट का जो शुरुआत होता है
हर इंसान का दो इंसान का एक जैसे नहीं होता, ठीक है, अपने टाइम पे होता है. I'll just quickly brush, okay, what I mean by that. I mentioned earlier in the previous slide, the skeletal maturation and morphological maturation coincide with puberty, right? So, see, I think I've mentioned in the previous class also. Okay, so peak height velocity occurs at a mean age of 11.5 years in females, right? But also one of the indicators, like in females, menstruation begin 1 year after peak height velocity. Okay, so peak height velocity occur at mean age of 13.5 years in males. In males, adult boys appear about 1 year after peak height velocity. So you can almost make a correlation that this thing coincide, the peak height velocity, right? And the what's that, the sexual maturation. Okay, so all this thing coincides. जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड से भी बोला था, जैसे कि आपका जो स्केलेटल मैच्योरेशन होता है और मॉर्फोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है, आपकी प्यूबर्टी, जैसे कि जो सेक्सुअल मैच्योरेशन को डिफाइन करता है, ठीक है, उसके साथ कोइंसाइड करते हैं. तो मेन रीजन में ये स्लाइड जो प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन मैंने इसलिए डाला आप लोग की रिमाइंडर के दौरान, ठीक है. जैसे कि आप देख सकते हो कि लड़कियों का जो पीक हाइट वेलोसिटी होता है 11.5 इयर्स में होता है, ठीक है, मीन एज पे, ठीक है. और जो इनका पीरियड्स का जो होता है 1 साल पीक हाइट वेलोसिटी के बाद उसका शुरुआत हो जाता है. फिर लड़कों में क्या होता है, पीक हाइट वेलोसिटी जो होता है मीन एज 13.5 इयर्स में शुरू हो जाता है, ठीक है. लेकिन जो उसका वॉइस का जो बदलाव होता है, चेंजेस होता है, ये सब जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है. तो ये 1 साल पीक हाइट वेलोसिटी के बाद शुरू हो जाते हैं. तो आप ये देख सकते हो कि मोरलेस कोइंसाइड करते हैं ये लोग. Similarly, for peak height velocity, I've explained also. Okay, now in the process of attaining the sexual maturity, the hormones are triggered, right? We have mentioned about testosterone and estrogen, right? So which bring about changes again in the overall composition. Okay, in terms of muscle mass, where the males actually have more deposition of muscle mass and the bone mineral density increases, while in female the fat deposition increases as well as the muscle mass also, but comparatively to the male it's less, ठीक है. जैसे कि मैंने बताया था, आप पीक वेट वेलोसिटी पे भी देख सकते हो, ठीक है. पीक वेट वेलोसिटी का शुरुआत पीक हाइट वेलोसिटी के बाद होता है, ठीक है. तो जैसे कि मैंने बताया था, जब प्यूबर्टी का जो ऑनसेट होते हैं, तो जब प्यूबर्टी का जो ऑनसेट होता है, ठीक है, इस पे क्या होता है, जैसे कि किन्हीं हार्मोन्स ट्रिगर होता है, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है. तो ये जो हार्मोन्स है काफी आपकी शरीर संरचना पे भी बदलाव लेके आता है, ओवरऑल पीक वेट वेलोसिटी पे, जिसके दौरान जो होता है लड़कियों का जो चर्बी का डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है, लड़कों में मसल मास ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और बोन मिनरल डेंसिटी भी इंक्रीज होता है. लड़कियों में भी मसल मास का डिपोजिशन होता है, लेकिन लड़कों से कंपैरेटिवली लेस होता है, ठीक है. तो ये चीज आप लोग को जानना जरूरी है कि मोरलेस कोरिलेटेड है, ठीक है. That is skeletal maturation, morphological maturation, and sexual maturation. Okay, तो more or less coincide. जैसे कि मैं अभी बता रही थी, skeletal maturation, sexual maturation और morphological maturation है, ठीक है. उन लोगों का जो onset होता है more or less आगे पीछे होता है. तो ये चीज आप लोग को जानना जरूरी है before going to the next slide. Now, you must have heard about early, average, and the late mature. Okay, so if you look at the picture, okay, if I say if you look at chronological age, okay, I mean, if I say that all the boys are of the same age, would you believe or not? अगर आप ये पिक्चर देखोगे ना, तो ये 3 जो लड़के हैं एक ही उम्र का है, ठीक है. So if you look at this picture, you can, I mean, there are lots of questions also, as well as lots of curiosity also. Why, right? तो आप ये क्लियरली देख सकते हो कि पिक्चर में देख के अगर ये जो 3 लड़का है एक ही उम्र का है, तो अलग अलग क्यों देख रहे हैं, ये क्वेश्चन तो आना चाहिए आपके दिमाग में.
है ना? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हम लोगों ने जैसे कि पीक हाइट वेलोसिटी, पीक वेट वेलोसिटी के बारे में काफ़ी डिस्कस किया गया है, ठीक है? तो खास तौर पे अर्ली, एवरेज और लेट मैच्योर को लेके हम लोग और भी डिस्कस करेंगे उसको लेके। So I'll be discussing on early, average, and the late mature. Now keep in mind about the adolescence growth spurt, okay? About the peak height velocity and peak weight velocity, which I've discussed previously. Now, if you look at most of the research, okay, those athletes where the onset of maturity is early, okay, those who are early mature, okay, for the chronological age, they are comparatively taller and stronger. Stronger because they have got more amount of lean mass and also have greater aerobic power. Okay, now why? Because individual with greater amount of lean mass have greater number of sarcomeres, okay, which promotes the production of strength through muscle contraction and superior muscle strength in the upper and lower limbs. ठीक है? जो बच्चे का जो मेच्योरिटी का जो ऑनसेट पहले हो जाते हैं, ठीक है, तो वो काफी लंबे भी होते हैं, ठीक है, और ज्यादातर ताकत भी होते हैं उनपे, क्योंकि उनमें लीन मास का ज्यादा होता है, उन लोग का एरोबिक पावर भी अच्छा होता है काफी, ठीक है। और खास तौर पे ये भी पाया गया है जिस इंसान में लीन मास ज्यादा होता है, ठीक है, तो उनपे ताकत ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, क्योंकि उसका जो मसल कंट्रैक्शन का पावर भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उसकी अपर और लोअर लिम्स पे, ठीक है, उसका मसल का स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये काफी रिसर्च ने पॉइंट आउट किया है। These are the reference which I've given also. Okay, so by this weekend, I think I'll be sharing a few of the articles. You can go through that one also. तो अभी आने वाले जैसे कि वीकेंड पे हम क्या करेंगे, एक दो आर्टिकल आप लोग को पढ़ने के लिए भी देंगे, so you can go through that one also. आप लोग वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। Now quickly going to strength. I mentioned earlier, right, in the previous class, in males, okay, the peak strain gain is at 12 to 18 months after peak height velocity and 9 months after the peak weight gain, right? One of the main factor being the increase in strength is a testosterone level, okay, which is why the adolescents respond favorably to muscle hypertrophy training. Okay, in female, it's with the onset of the peak weight velocity. मैं ये last class का मैं जल्दी से explain कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जो आखिरी वाला जो होगा, अगर आप ये नहीं जानोगे तो वो समझ नहीं पाओगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो स्ट्रेंथ का जो होता है, ठीक है, लड़कों में 12 से लेके 18 महीने, ठीक है, पीक हाइट वेलोसिटी के बाद सबसे पीक में होता है वो, ठीक है, और उसके बाद 9 महीने आफ्टर द पीक वेट गेन के बाद सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। एक कारण जो स्ट्रेंथ इंक्रीज होने के जो कारण होता है वो है टेस्टोस्टेरोन लेवल, ठीक है, और ये एक कारण भी है जिसके दौरान जो स्पेशली जो एडोलेसेंस है वो हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग को मोर फेवरेबली रिस्पॉन्ड करते हैं, और लड़कियों में जो होता है ऑनसेट ऑफ पीक वेट वेलोसिटी, ठीक है। नाउ इन टर्म ऑफ स्पीड, okay, it develops actually 12 months before peak height velocity. It will reach a plateau, okay. It will reach the peak at the start of peak height growth, and it will reach a plateau after that, okay. It does not mean it will pick up, but after the onset, okay, it will reach a plateau. Now in females, the variation is more. Similarly for agility also, जैसे कि मैंने स्पीड और एजिलिटी के बारे में भी लास्ट टाइम बताया था, ठीक है, ये लड़कों में डेवलप हो जाता है 12 महीने बिफोर पीक हाइट वेलोसिटी, ठीक है, और पीक हाइट वेलोसिटी की शुरुआत में वो पीक पे पहुंच जाते हैं, और पीक हाइट वेलोसिटी के जो दौरान पे है वो एक प्लेटू पे रीच हो जाता है, ठीक है। तो लड़कियों में ज्यादातर वेरिएशन पाया गया है। सिमिलरली जैसे कि agility में भी similar है, ठीक है। Now if you look at agility also, as I mentioned earlier, in males actually it's more or less similar, and in females also it's similar to the speed studies. Now see, the importance actually lies here. Now for example, you have got males, okay, जैसे कि you have got 3 male athletes who are of the same chronological age, okay, 14 years old. One is an early mature, one is an average mature, one is a late mature,
Okay, you can clearly see that the early maturing athlete will have an advantage in terms of strength, speed, and agility. Okay, although you're going by the chronological age here. Okay, now for example, say the early mature, the peak height velocity has already set in, and he is going in for the peak weight velocity. Okay, he is maybe 10 months into peak weight velocity here. Okay, so you can see he has an advantage in terms of strength, speed, and agility. Okay, now for an early mature, say the peak height velocity started off maybe around, say, 12.5 years of age. Okay, now coming to the average. Okay, now 5 months is the onset of peak height velocity. That it means to say the peak height velocity has just set in. It's just been 5 months. That means the peak height velocity for him has set in around 13.5 years of age. Okay, now in case of late maturing athletes, there's no onset of peak height velocity. Now remember, in case of late maturing athletes, here I'm saying males here, it can start off at as late as 16 years of age also. Okay, so you can see that the early maturing athlete clearly has an advantage over the other two. Okay, तो आप इस पे देख सकते हो कि मैंने एक एग्जांपल दिया है 3 लड़कों का, ठीक है, जो 14 साल के हैं. हमने क्रोनोलॉजिकल एज ही कंसीडर करके उसको दिया हुआ है, माना कि सिर्फ क्रोनोलॉजिकल एज कंसीडर किया गया, ठीक है. तो एक जो एथलीट है वो अर्ली मैच्योरिंग है, ठीक है, दूसरा जो है वो एवरेज है, और तीसरा जो है लेट मैच्योरिंग एथलीट है, ठीक है. माना कि जो अर्ली मैच्योरिंग एथलीट का जो है उसका पीक हाइट वेलोसिटी का ऑनसेट है, ठीक है, 12.5 वर्ष पे शुरू हो गया, ठीक है, 12 साल 12.5 ईयर्स पे शुरू हो गया, ठीक है. तो आप इस पे देख सकते हो कि उसका पीक हाइट वेलोसिटी तो ऑलरेडी शुरू होके भी खत्म हो गया, उसका पीक वेट वेलोसिटी 10 महीने चल रहा है, ठीक है. और फिर आप इस पे देख सकते हो कि एवरेज जो मैच्योरिंग एथलीट है, ठीक है, उसका जो पीक हाइट वेलोसिटी का शुरुआत हो गया 5 महीने पहले. दैट मींस 13.5 ईयर्स पे शुरू हुआ, ठीक है. और लेट जो मैच्योरिंग एथलीट है उसका शुरू ही नहीं हुआ पीक हाइट वेलोसिटी, ठीक है. ये ध्यान रखना कि लेट मैच्योरिंग जो एथलीट होता है उन लोगों का पीक हाइट वेलोसिटी का ऑनसेट 16 वर्ष पे भी शुरू हो सकता है, 16 ईयर्स पे भी. लेट मतलब काफी लेट भी होता है उन लोगों का 16 ईयर्स तक. तो आप इस पे देख सकते हो जो अर्ली मैच्योरिंग एथलीट है, ठीक है, स्ट्रेंथ, स्पीड और एजिलिटी पे उसका काफी एडवांटेज होंगे कंपेयर टू दी अदर टू, ठीक है. तो ये आप लोगों को कोचिंग के दौरान आप लोग को ये जानना काफी जरूरी है. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से यू हैव टू असेस द एथलीट इंडिविजुअली. द ट्रेनिंग प्रोग्राम हैज टू बी डिजाइन्ड इंडिविजुअली, ठीक है, नॉट गोइंग बाय द क्रोनोलॉजिकल एज. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आपको जब एथलीट आपके पास आ रहा है आपको उसको इंडिविजुअली देखना है, स्पेशली जो एडोलेसेंस एथलीट आप डील कर रहे हो, ठीक है, ना कि उन लोगों को एक ही एज कैटेगरी में डाल के ट्रेनिंग दिलवाना है. As I mentioned in the previous slide, okay, I've given an example. Now you can see that the difference in growth and maturation obviously will contribute to competitive inequality. Okay, the early maturing athlete will have an advantage over the other two. Okay, and the risk of injury for the others also is more, especially if you look at the average maturing athletes. Okay, the risk for injury, especially for the average maturing athlete, will be more if you go by the previous example. So identifying an early, average, and late maturing athlete is important in order to design appropriate training program. Okay, so that you can give optimal training. Okay, and if you can also see whether the athlete readiness for it also. ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड पे दिखाया था 3 एग्जांपल देके आप लोगों को, ठीक है. तो आप ये देख सकते हो कि एक तो खास तौर पे कॉम्पिटिटिव इनइक्वालिटी तो देगा ही देगा एथलीट पे, ठीक है, क्योंकि अर्ली मैच्योरिंग एथलीट हमेशा एक एडवांटेज पे रहेगा दूसरे दोनों एथलीट पे, ठीक है. और अगर एग्जाम्पल के दौरान अगर चले जाए तो एवरेज जो मैच्योरिंग एथलीट है, अगर उस टाइम पे आपने एक ही एज के क्रोनोलॉजिकल एज के हिसाब से हम लोगों ने आपने ट्रेनिंग दिया, तो जो एवरेज मैच्योरिंग एथलीट है उसका इंजरी का चांस ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला था 5 महीने ऑनसेट ऑफ पीक हाइट वेलोसिटी. दैट मींस उसका ग्रोथ प्लेट काफी सेंसिटिव होंगी उस पे, है ना. तो ये चीज आपको
याद रखना है, खास तौर पे, ठीक है, जब आप ट्रेनिंग प्लान बना रहे हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, खास तौर पे आपको इसलिए अर्ली, एवरेज और लेट मैच्योरिंग एथलीट को आइडेंटिफाई भी करना है, ठीक है, ताकि आप ऑप्टिमल ट्रेनिंग भी दे सकते हो और उसकी जो रेडीनेस, एथलीट की रेडीनेस, ठीक है, वो भी पता कर सके आप, ठीक है. और it has also been seen, this is we are almost coming to the end of the slide. I think I'll wind up in another 3 minutes. Okay, now boys actually who mature for the chronological age, okay, that is the early maturing athlete, are comparatively heavier. Okay, now they have increased shoulder breadth and upper body muscle mass is more. Okay, while the late maturing athletes, they have heavier, I mean, they have greater weight to height ratio, meaning that the body weight will be more compared to the height. The height won't be of that much. Okay. Also, they will have broader hip and shorter legs. Okay, and the fat deposition will be more. Okay, and also one thing is like in most of the studies, it has been shown that especially the late maturing athletes more or less exhibit a linear physique. Okay, that is they have got more of height. Okay, compared to the weight. Also, the body fat percentage is the body fat deposition is comparatively less. Okay, and they will have longer legs, and the shoulder and hip won't be towards the wider side. It will be either towards the medium side or towards the narrow side. ठीक है, तो काफी स्टडीज ने भी ये बताया है कि जो अर्ली मैच्योरिंग एथलीट्स होते हैं, खासतौर पे बॉयज होते हैं, ठीक है, उन लोगों का जो वजन होता है वो काफी ज्यादा भी होता है और उसकी जो शोल्डर, खासतौर पे उसके कंधे जो होते हैं वो चौड़े भी होते हैं, ठीक है, उसकी अपर बॉडी मसल मास का ज्यादा होता है. फिर लड़कियों में भी ये दिखाया गया है कि उसकी जो लंबाई तो इतना ज्यादा नहीं होगी जो अर्ली मैच्योरिंग एथलीट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उसका वजन ज्यादा होगा और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर उसका वजन जो होगा, उसका फैट डिपोजिशन ज्यादा होगा, ठीक है, उसके कमर जो है वो चौड़े होंगे और उसके जो पैर के जो हिस्से वो कम होंगे कंपैरेटिवली. और लेट मैच्योरिंग एथलीट्स पे भी ये दिखाया गया है कि ये लोग काफी ज्यादातर लंबे होते हैं, ठीक है, उनका फैट डिपोजिशन कम होता है और उसके पैर के जो हिस्से वो लंबे होते हैं और उसकी कमर और कंधे के जो हिस्से होते हैं, ठीक है, वो आइदर मीडियम कैटेगरी में आते हैं नहीं तो नैरो पे आते हैं. Now, this is the last slide, okay. Now, if you look at most of the studies right now, if you must have come across the word biobending, okay. Now, studies actually have shown that it's best to match an athlete on the basis of physical attribute and maturity status rather than going by the chronological age. ओके, तो आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा बायोबेंडिंग करके, ठीक है, जिसपे खासतौर पे इस पे काफी रिसर्च कर रहे हैं अभी, ठीक है, जिसपे एथलीट को, ठीक है, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स और मैच्योरिटी स्टेटस के हिसाब से उसको मैच करना है, ना कि उसकी क्रोनोलॉजिकल एज पे. More or less like, you know, it means to say कि, you know, your training, okay, the training design and all this things should be planned, and the athletes competition and all this things should be planned on the maturity status and not on the chronological status. Okay, the chronological age is nothing but it's more or less we follow the calendar thing, that is the date of birth up to the current date. Okay, so that will give you the age. ओके, तो ये रिसर्च जो है काफी पॉपुलर है आजकल, ठीक है, तो आई थिंक आई विल एंड माय स्लाइड विद दैट. ओके, सो स्पेशली इन द डिस्कशन और भी थोड़ा इलैबोरेट करेंगे बिकॉज आई थॉट कि वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम एंड आई हैव रश्ड थ्रू इन मोस्ट ऑफ द स्लाइड. सो इन द डिस्कशन एक्चुअली विल take it one at a time and then we'll have a better discussion on that one, okay, for group 1 actually. Is it okay? Can you give it thumbs up if it's okay?